Push the seat rest out. There you go. Okay, practice your paddles. No, really practice pull. Okay, get it? Ready? Okay. Time for the send-off. Keep going. There you go. Now you get it? Okay, you're free. How do you make it done? Okay, one side. Out one side. Again. You see? Bye. भाई हम लोग यहाँ आए हैं, कायाक्स चला रहा हूँ मैं अभी, पहली बार लाइफ में, पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इस चीज़ का। बहुत फन है, इतने बड़े डिस्टेंस पे इतनी बड़ी लेक पे हम अकेले हैं। पर मुझे पहले शुरू में लगा था बहुत हार्ड होगा इसको चलाना, पर बहुत आसान है, बस तुम्हें बैलेंस करके सीधा बैठे रहना होता है और ये स्टिक के मूव इसकी मदद से मूव करना है। पर बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स फन, बहुत शांत है। हम आए पैरी साउंड करके एक जगह है, बहुत फ़न है यहाँ पर। अभी हम लोग बोटिंग करने भी जाएंगे, फ़िशिंग करने जाएंगे तो उसका भी बताऊँगा। बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार लाइफ टाइम, फर्स्ट टाइम इन लाइफ एक्सपीरियंस है और लाइफ टाइम याद रहे ऐसा एक्सपीरियंस है। सो इट्स फन। आगे की चीज़ें बताता हूँ, जब हम बोटिंग करेंगे, फ़िशिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाऊँगा। जस्ट अभी हम लोग अराइव हुए आधे घंटे पहले और मैं सबसे पहले यही ट्राई किया है। मेरे ओनर ने मुझे फोर्स किया कि गो ट्राई, मैं अभी कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं और दूर जाने वाला हूँ, मैं आपको बैक पीछे दिखाता हूँ बैक व्यू से। ये है पूरा लोकेशन, हम वहाँ से आए हैं उधर से, अभी मैं पूरा उस तरफ जाने वाला हूँ। पूरा लेक इतना बड़ा, हम घूमेंगे, इट्स फन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे और आगे के अपडेट्स आगे देता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लहरों के ऑपोजिट जा रहे हैं। पानी उस तरफ से मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूँ। जो फीलिंग है, सेटिस्फाइंग फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम पानी के सरफेस पे तुम बैठ के एकदम बस फ्लोट कर रहे हो। इतना क्लोज है क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल कम है और मैं बहुत दूर आया हूँ वैसे तो अपनी जगह से। यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, बेल का इंटरनेट अच्छा चलता है यहाँ पर जो नेटवर्क है, पर मेरा रॉजर से मेरा यहाँ पर कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं उसका ओनर का वाईफाई यूज़ कर रहा था, पर थोड़ा घर से दूर आ गया तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है। पर यहाँ पर हर एक के पास इतनी एक्सपेंसिव बोट्स हैं, सब कुछ। हम भी जाने वाले बोटिंग पे, हमारे पास सेलिंग बोट है, मेरे ओनर की है, और एक क्रूज़ टाइप एक शिप है बहुत बड़ी सी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी और बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही फ़न है, सो इट्स गुड। अभी और भी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आज बारबेक्यू भी करने वाले हैं, फिर हम बोट में जाएंगे, फ़िशिंग करेंगे। मैंने फ़िशिंग कभी नहीं किया तो पहली बार हम फ़िशिंग करने वाले, सो लेट्स सी। मुझे पहले लगा था ये बहुत हार्ड वर्किंग होगा मूवमेंट करना, पर नहीं, इतना नहीं है, अच्छा है, ईजी है। बस 2-3 मिनट लगते हैं, एक बार बैलेंस हो जाए बस तुम्हें सीधा बैठे रहना और बस हाथ का मूवमेंट करना है, चीज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस कॉटेज की तरफ। हम कल तक यहीं हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, तो सुबह सुबह मैं देखना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वाइब्स कायाक्स में कैसी लगेगी जब सनराइज़ होगा, तो हम तब भी जाएंगे। सो इट्स फन, सो सी यू इन नेक्स्ट टेक, बाय बाय। Master Chef Canada.
Burger. How about a double? Holy, okay. That's for the whole day. Go ahead and eat your helmet while you're still. It's getting cold. So hello everyone. अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए. बोट रेडी कर ली है उन्होंने. ये रही. हम अभी इसमें मूव करेंगे. So मैं क्लिप दिखाता हूँ. अभी हमने रेडी की है. So this is our boat. So we have to charge and then? Okay. Abby, say hi in my vlog. How we are going to put that thing in that garage? It's not working, so do we have to like... So how we'll charge it then? Oh. Here's the biggest cottage on the lake. That one? So good, right? And even the next one beside that. So अभी हमारी बोट चल रही है अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में. It's good. ये बहुत बड़ी लेक है. हम बहुत दूर आ गए हैं. पूरा घूमते हुए उधर बहुत दूर से आए. वीडियो में देख सकते हो. ओनर अभी चला रहा है गाड़ी. The owner is driving the boat. Around the area.
सो गाइस अभी हम लोग ट्यूब को इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग इन्फ्लेट करेंगे, फिर हम जाएंगे बोट के पीछे बांध के। Bring it here. Sophie, come. Come on. You do listen better than this. Come on. Left the toy. Oh yeah. She's like, no, you're gonna do that. Stuff, and she's gonna use her top of it. So she goes, I give you so much with that stuff. Remember, it's gotta go away somewhere at the end of the season. This is actually pretty nice. Yeah, it is. Is she having her own? She hasn't owned a life jacket yet. Well, she's not used to swimming all the time, so if she gets tired, it's easy for her to drown and things. I've seen a video of the dog drowning. Are you ready yet? Basically, just find the back, the middle balance point, and using your core to keep you steady. It's a workout. You just gotta get off the fin. There you go. Where's the camera? You got your camera? Yeah, that's all. Hey, I don't mind you. Sophie, come on. Sophie, go for right. Come on, atta girl. Oh, jeez. Stay, stay. Okay. I can balance her and me both. Yeah. When you get halfway up there, I'm gonna call the dog. No! She will jump. She propels off. Stay, stay, stay. Wait, wait, wait. Good girl, Sophie. Wait. Good girl. Don't go keep me. She can do this section. Wait, Sophie. Just use the word wait with her. Wait. Good girl. Good job. She knows where her eye goes, so that's no problem. I'm on shore. And balance. I'm not with her, so she's... I really thought you were running. That's fine, right? Good girl. That was pretty good. Sophie, stop. Leave. Stop working. Let's go. Where?
Well, let me get her life jacket. Yeah, you get yours. Sophie. A very smoky barbecue sauce. Bullseye. You can have it in the store. I bought it at Costco. You can now buy it. How they look? Perfect. What I do need is a frickin' brush with a longer handle. God, that's hard. Stop. There's a couple more carrots here for you guys. Open now 9. Yeah. Yeah, I know. But now 9 for all summer. That makes sense. Wow. When we first came, And then we have 1, 2, 3. Hydrate, come on in. Let's go. No. Monster in the lake. Everyone, आज हम लोग खेल रहे हैं pool. This is a pool table. All right.
गए हम लोग सुबह सुबह। हमने नाश्ता किया है, ब्रेड एंड एग, बेकन एंड मैपल सिरप। सो अभी हमारा प्लान है ट्यूबिंग करने जाने का। हम बोट के पीछे ट्यूब बांधेंगे और मेरा ओनर चलाएगा, मैं और एबी बैठेंगे हम लोग ट्यूब पर। बहुत फन है। हमने जकूज़ी में रात को पूरा स्काई ओपन था तो हम स्टार्स देख रहे थे बहुत क्लियरली। उसकी भी मैं क्लिप डालूंगा जो हमने पिक्चर खींची है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे शायद फ़िशिंग के लिए, फ़िशिंग करेंगे। सारे एक्सपीरियंस जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारे मेरे फ़र्स्ट टाइम है। और ये कॉटेज का मैं पूरा टूर दूंगा थोड़ी देर में कि कहाँ पर क्या है सब कुछ। और दिन की शुरुआत हुई है अभी। सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ कॉटेज का। सो स्टे। सो वहाँ पे पार्क करके हम लोग अंदर आते हैं। एक वो जो बाहर दिख रहा है वो एक गेस्ट वॉशरूम है। अंदर आते ही डिवाइड होता है बेसमेंट एंड टॉप। टॉप में एंटर होते ही पहला है किचन, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ। और राइट साइड में थोड़ा लिविंग एरिया जैसा है टाइप। और जितने भी पिक्चर्स आप देख रहे हो सारे इसी कॉटेज में क्लिक किए गए हैं। और फिर ये एक है डाइनिंग एरिया, ये छोटा सा बार, ये ग्लासेस एंड डिशेस कलेक्शन है। दिस इज़ स्मॉल बार थिंग। ये बोट भी हम चलाएंगे जो रिमोट से चलती है। एंड ये एक रूम है, दिस इज़ वॉशरूम, दिस इज़ अनदर रूम। और एक और गेस्ट। और लिविंग रूम से निकलते ही यहाँ पर एक दरवाज़ा है। हमने कल यहाँ पर बारबेक्यू किया था ये वाले एरिया में। और सामने ही एक ओपन एरिया है ऐसा। कल बॉनफायर वहाँ हमने किया था, रात को बैठे थे। और ये है जकूज़ी, यहाँ बैठ के हमने स्टार्स देखे थे ऊपर। उसका क्लिप मैंने बताया, मैं जैसे कि मैं ऐड कर दूँगा। और ये हमिंग बर्ड्स के लिए शुगर सिरप टाइप एक लिक्विड है वो लगाया है। बहुत मज़ा आया, अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। हमने स्क्विरल को अपने हाथ से नट्स खिलाए, उसका भी पिक्चर है मेरे पास, मैं ऐड कर दूंगा ऊपर कहीं कोने में। और अभी हम जाने वाले हैं ट्यूबिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूब। तो मैं उसका भी पिक्चर डालूंगा, मैं फिर से जाऊंगा। और अभी हम जाएंगे, पहले फ़िशिंग ट्राई करेंगे क्योंकि कल शाम को मैंने अराउंड 1-1.5 घंटा किया पर एक भी फ़िश हाथ नहीं आई। सो हमें उसके लिए बहुत पेशेंस रहना पड़ता है। एंड दिस वी आर गोइंग फॉर फिशिंग नाउ। No, tubing. No, a little bit fishing then tubing. Okay, you tell that to Steve. Okay, let's go. Because I have to change, right, for tubing. तो अभी हम लोग जा रहे हैं। जो मेरी ओनर की जो सिस्टर है वो ऑलरेडी अभी कर रही है। और ये भी एक एरिया है, बंकी कहते हैं इसको। इधर भी 3 बेड हैं और उसके साइड में अटैच गैराज है जिसमें बोट्स रहती है विंटर में। और ये पूरा डॉक है, ये नेबर है पूरा, ये नेबरहुड, ये नेबर्स का है। और ये भी, और वो जो है डॉग वो मेरी ओनर की सिस्टर का है, उसका नाम है सोफ़ी। सोफ़ी, टच। No noise.
too. I'm telling you, he caught them all right down here, didn't he, Chris? Pardon? He caught them all right down here. Yeah. So we are ready to go for tubing. It's ready, I am ready, the boat is ready. Sophie! Girl. That's better. Yep, they're good. Yep. Hold on. All right, tight. Boy. Don't go too deep. Kayaking. Or what is this? Paddleboarding? I think Elle's been in this one. Why? He's back too far. What's that? Elle. He leans back. He doesn't use his stomach muscles for kayaking. He leans back. I think he's been in this one. For deer. Mary. Oh, yesterday we saw the helicopter. That one. Yes.
longer जा रहे हैं. The guy is running at this time. They run all the time. सब यहाँ से हम डिनर कर घर निकलेंगे. अभी शाम के 4 बज रहे हैं. बाकी की अपडेट लेता हूँ बाद में घर पहुँच के. So till then, bye.